Assalamu alaikum. Today we're going to start lecture number 23, which is still in continuation of chapter number 11 that we were doing. Chapter number 11 is basically about developing a particular product and then how to price it effectively so that it becomes an attractive option for your customers to buy, and the company or the organization is also getting a profit or getting money or making money out of that particular product. The chapter outline that we've done before as well is, first up, we've already discussed with you as to what a product is. Then we went through the new product development process, which is basically कि आप कोई नई product जो है उसको आप कैसे develop करते हैं, कैसे बनाते हैं, from idea generation to actually commercializing it. Then we identified different types of products, जहाँ पर हमने convenience products की बात की, and we talked about shopping good, and we talked about specialty good, and we talked about convenience goods. And then we also said कि जी आपकी industrial products की भी different types होती हैं, जिसमें आपका market या expense items होते हैं या capital items होते हैं. Then in this particular chapter we will also talk about कि आप जब प्राइस डिटर्मिनेशन की हम बात करते हैं या व्हेन वी से कि जी एक प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए, हाउ डू कंपनीज फिगर दैट आउट, ये इक्वेशन वो कैसे सॉल्व करते हैं या ये प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व करते हैं एज टू हाउ टू प्राइस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एंड फाइनली हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज और प्राइसिंग टैक्टिक्स की भी बात करेंगे. Again, we're going to start from where we ended our last lecture, which is कि जी product life cycle क्या होता है. जब भी हम product life cycle की बात करेंगे उसमें basically you have multiple options, right? Every product that we use, big or small, expensive or inexpensive, will go through a product life cycle. It will have an introduction stage, it will have a growth stage, it will have a maturity stage, it will have a decline stage. Now इस पूरे लाइफ साइकिल में your profits and your losses would also vary. For example, जो कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट पे दे स्टार्ट अर्निंग प्रोसेस समवेयर इन द मैच्योरिटी स्टेज. इंट्रोडक्शन स्टेज में आपकी प्रमोशन ज़्यादा होती है, आपका डेवलपमेंट बजट ज़्यादा होता है, आपके डेवलपमेंट और प्रमोशनल एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा होता है दैट अ कंपनी कैन नॉट एंड विल नॉट अर्न अ प्रॉफिट. Growth stage में again your profit starts going up, there are more customers who are buying your products, your sales start climbing, and you have a larger amount of competition in this growth stage. Then when you come in the maturity, that is the point where you have the highest profit margin available to you. But this is also the time when you start thinking in other ways as well. You start thinking, okay, how can I increase my profitability, because there's so much of competition at the maturity stage that you start thinking of cutting back your prices or reducing your prices or giving your customers some sort of discounts. And finally you have a decline stage whereby the sales starts dipping, whereby the profit starts going down, whereby you also stop spending on promotion or you spend very little on promotion, and that is the time when your product really goes at the end or goes down. Again, just like last lecture, every phase in the product life cycle is characterized by certain things. For example, when we're talking of the introduction phase of the product life cycle, that is the point in time whereby new products are introduced. There's extensive promotion and the development costs are so much that they literally eat up the profits that a company is making. Again, during the introduction stage, there's very little profit that a company is making. Growth is the point in time when more and more consumers are attracted towards buying your product. Sales climb, profits go up, and the competition also increases because they feel it's an opportunity. It's a very good option whereby the customers are buying a particular product. So why not let's make this product and bring it to the market. Maturity is the point when the sales level off. At this point in time, you earn the highest amount of profits. However, towards the end of your maturity stage, your sales starts dipping and your profit starts going down. Then lastly, you have the decline stage whereby other competing new products are introduced. Your competition comes up with a better version of your product, which is with an improved version of your product or with the technologically advanced version of your product. Your sales and your profit starts declining or starts going down, and you do not want to spend your resources promoting your product because you feel कि जी product already खत्म हो रही है. तो there's literally आपका जो wastage of money होगा अगर हम उसको promotion पे spend करेंगे. Now, जब भी हम बात करते हैं कि जी डिक्लाइन की तरफ जब आपकी प्रोडक्ट जाती है, तो at that point in time, organizations and companies have various options available to them कि जी डिक्लाइन के स्टेज को
या मेच्योरिटी के एंड को किस तरीके से प्रोलॉन्ग किया जाए, या डिक्लाइन की स्टेज में जब आपकी सेल्स या प्रॉफिट्स कम हो रहे होते हैं तो वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल टू अ कंपनी, वेरियस अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशंस कि जी हम क्या काम करें कि हमारे प्रॉफिट्स या सेल्स जो हैं वो कम ना हो। वो क्या काम जो है वो बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं। फर्स्ट अप इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बेसिकली इज एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स दैट इज मार्केटेड ग्लोबली इंस्टेड ऑफ जस्ट डोमेस्टिकली। आप अगर पहले सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को सिर्फ अपने ही मुल्क में मार्केट कर रहे थे या सेल कर रहे थे और आपकी प्रोडक्ट जो है वो अब उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं है या वो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं रही, देन व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट गोइंग ग्लोबल। यू टेक योर प्रोडक्ट टू अनदर कंट्री विच इज़ डिमांडिंग, और जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी ऐसी नीड्स एंड वांट्स हैं जो कि आपकी सेम प्रोडक्ट जो है उसको फुलफिल कर सकती है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इज एक्सटेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट, whereby you take your existing product that is marketed globally instead of just domestically. Instead of just domestic marketing, you take your product on a global scale, you take your product into another country so that your sales they go up, they start climbing again, and your profits they start going up again. The other alternative that is available is product adaptation, whereby the product is modified for greater appeal in different countries. Again, आप जो है country to country specific आप उस अपनी product को customize कर देते हैं। आप उसको internationally या globally तो लेकर जाते हैं, लेकिन आप अपनी product को adapt कर देते हैं according to the needs and wants and preferences of the people living in those other countries. For example, if you go to USA and you taste McDonald's there, it will have a different taste as compared to the McDonald's that you eat in Pakistan. Similarly, when you go to India, their McDonald's has a totally different menu and a totally different taste as compared to the McDonald's that you eat in Pakistan. So what McDonald's has done is that it has adapted its product to the various preferences of the countries in which it sells its product. So that is what we call as product adaptation. And finally, you have reintroduction. Reintroduction is reviving obsolete products for new market. For example, एक ऐसी चीज़ जो कि let's say कि अमेरिका में इतनी यूज़ नहीं होती. For example, more and more Americans are now moving towards LED screens, right? LED TVs. However, पाकिस्तान में तो अभी LCD ही इतना कॉमन नहीं हुआ कि हम LED की तरफ जाएं. So reintroduction is कि अगर एक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर कंट्री में ऑब्सोलीट हो चुकी है तो शायद दूसरी पर्टिकुलर कंट्री में वो उस प्रोडक्ट की जो कि प्रोडक्ट एक कंट्री में ऑब्सोलीट हुई है, सेम प्रोडक्ट की शायद दूसरी कंट्री में मार्केट हो. सो व्हाट यू डू इज दैट यू टेक योर ऑब्सोलीट प्रोडक्ट इनटू अनदर कंट्री, एंड उस कंट्री में सिंस वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट नहीं होती है, उस कंट्री में शायद वो कंट्री इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस ना हो, उस प्रोडक्ट की सेल्स भी हो रही होती है और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी को हो रही होती है. अगेन, all these 3 alternatives that I've just told you about, what they do is that चाहे अपने प्रोडक्ट को एक्सटेंशन में ले जाएं या प्रोडक्ट को अडाप्ट करें या प्रोडक्ट को रीइंट्रोड्यूस करें, व्हाट अ कंपनी इज डूइंग बेसिकली इज दैट इट इज प्रोलॉन्गिंग द लाइफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, इट्स इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, एंड वंस इट इज प्रोलॉन्गिंग द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट इट इज एक्चुअली डूइंग इज जहां पर सेल्स डिक्लाइन होना शुरू होती हैं, जिस पॉइंट पर प्रॉफिट्स कम होना शुरू हो जाती हैं, वहां पर कंपनी सोचती है रीइंट्रोड्यूस करवाऊं, अडेप्ट कर रहा हूँ या एक्सटेंशन की तरफ जाऊँ. और इनमें से जो भी अल्टरनेटिव कंपनी फॉलो करती है या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स कंपनीज फॉलो करती हैं, व्हाट हैपेंस देन इज देन द सेल्स स्टार्ट्स गोइंग अप and the profit starts going up. Again, the ultimate objective of any organization, of any company, of any business concern is profitability. So whatever they're doing, it is with a single aim in their mind that हमारी profitability कम नहीं होनी चाहिए, हमारी sales decline नहीं होनी चाहिए. The minute the sales and the profitability will start going down, they'll start thinking reintroduce कर रहा हूँ किसी और country में, adapt करूँ, कुछ difference लाऊँ, कुछ changes लाऊँ, या extension की तरफ चला जाऊँ जहाँ पर मैं domestic के बजाय अब global business के बारे में सोचना शुरू करूँ. So that is what we talk about जब हम बात करते हैं कि अगर डिक्लाइन की तरफ आपकी प्रोडक्ट जा रही हो, then that is what a company should do. Now again हम अब जो continuously बात कर रहे हैं, that is with reference to what a product is और product life cycle क्या है और product जो है न्यू प्रोडक्ट किस तरीके से डेवलप करती होती है. लेकिन जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, why is it that whenever I drink a juice, it is always Nestle that I drink. आप मुझे शिज़ान दे दें, आप मुझे all fruit दे दें, मुझे नहीं, मुझे ये नहीं पीना. Juice is going to be Nestle.
if it is going to be if it's going to be a particular shampoo, it's going to be let's say कि मैं एक particular brand shampoo का use करती हूँ, if it's going to be a shampoo, it's going to be Head and Shoulder every time. तो why is it कि मैं सिर्फ Head and Shoulder ही खरीदती हूँ और नेस्ले का ही जूस पीती हूँ? It is because of that I feel कि नेस्ले का जूस is a better juice. इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है, वो कंपनी भी ज़्यादा बेहतर है, and I feel loyal towards that particular brand. Now that is what we're going to talk about. We're just going to talk about why a particular customer, why a particular individual is more inclined towards buying a particular thing again and again and again, and does not want to buy a similar product of a different company. It is basically because कि जब हम product features की बात करते हैं, that is just one part of the product. जब हमने product को define किया, हमने कहा जी product की definition में product के features आते हैं, but that is just one thing about a particular product. The second very important part about a product is कि आपका consumer जो है वो आपकी product को कैसे recognize करता है. If you're going to ask me, कोई मुझसे पूछे कि जी मुझे good quality juice पीना है, मैं कहूँगी नेस्ले पियो. I'm not going to think about Shizan. I'm not going to think about all fruit. Again, it does not mean कि Shizan and all fruit are not good juices. It's just in my mind, a good quality juice is equal to Nestle. That is why when I say कि जब हम product को define करेंगे, it is not only be about the features of a particular product, it will also be कि एक consumer और एक customer जो है वो एक product को recognize कैसे करता है. With reference to recognition of a particular product, three things should come into our mind: branding, packaging and labeling, right? First up is branding. Branding is basically a process of using symbols to communicate the qualities of a particular product, and that is what a brand name does as well. हम जब brand की बात करते हैं, it is a name or it is a symbol or it is anything that distinguishes one product from the other product. So अगर मैं कहती हूँ Nestle Fruta Vitals, ये नाम all fruit से फ़र्क है, and just because of the name, that all fruit is a brand name, Fruta Vitals is a brand name, and a brand name की definition क्या होगी या brand की definition क्या होगी? Something which differentiates one product from another product. ठीक हो गया? So that is what a brand name is, and when I say a brand, that is exactly what I mean. So जब हम branding की बात करेंगे, branding is basically symbols to communicate qualities of a product. Nestle is a brand name, right? Nestle is the name of a company as well. और जब हम Nestle जो है वो Fruta Vitals बनाता है या fruit juices बनाता है, I say Nestle is a multinational company which is operating in so many other countries, and they have very high quality standards, and they've been producing juice for so many years. And I feel that just the name of Nestle Fruta Vitals it sort of symbolizes quality, and it symbolizes freshness, and it symbolizes health. So branding से ये feeling आती है. So branding is basically a process of using symbols to communicate a quality of a product. So जब मैं कहती हूँ Nestle Fruta Vitals, just the name tells me that the juice that I'm going to drink will be hygiene, will be very healthy, will be very cleanly processed, will be made in hygienic conditions, and will be of very, very good quality. So that is what branding does. जब आप कोई नाम सुनते हैं, Levi's jeans, automatically आता है good quality jeans which are going to last you for the next 3-4 years. ना fade होंगी, ना खराब होंगी, ना बुरा आएगा, ना धुलने धुलाने में ख़त्म हो जाएंगी. So that is what a brand name does. Every brand के साथ आपके जहन में उसकी उस particular product की qualities दिमाग में आ जाती हैं, right? So इसको हम branding कहते हैं. The next thing that through which you can identify a particular product is through its packaging. Packaging is basically a physical container in which a product is sold, advertised or protected. So जब हम जाकर नेस्ले का जूस पीते हैं, तो नेस्ले का जूस एक लिक्विड है, लेकिन जो उसके बाहर उसका टेट्रा पैक का डब्बा है, that is what packaging is. Similarly जब हम मिल्क पैक खरीदते हैं या कोई और प्रीमा का दूध खरीदते हैं, then the tetra pack that the milk in which the milk is contained is what we call as packaging. So packaging is basically that physical container that you have जो कि आपकी product को protect करता है, आपकी product उसके through advertise होती है और आपकी product उसके अंदर sell होती है. जब आप कोक पीते हैं, so चाहे आप tin पिएं या bottle पिएं, so that tin made of आपका जो material होता है या जो bottle जो कि glass की होती है, that becomes packaging.
And again, through packaging, you identify a particular product. For example, Lipton, yellow, right? Its packaging is yellow. So आप येलो पैकेज देखते हैं, आप लिप्टन नहीं भी पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा जी येलो डब्बा है, लिप्टन होगा. सिमिलरली अगर रेड है तो टिपाल होगा. आप टिपाल नहीं भी पढ़ेंगे, आपको रेड टी का पैकेज नजर आएगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये टिपाल की चाय है, राइट? सो पैकेजिंग से आप अगेन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द थर्ड थिंग थ्रू विच यू कैन आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट इज थ्रू इट्स लेबलिंग. Now, what is labeling? Labeling is basically part of packaging that identifies its name, manufacturers and content. So label जो है वो एक बहुत different चीज़ नहीं होता. Label and packaging they go hand in hand. Label is part of packaging and label का purpose ये होता है कि वो product का नाम, मैन्युफैक्चरर का नाम और कंटेंट आइडेंटिफाई करती है. सो जब आप लिप्टन येलो लेबल का डब्बा उठाते हैं तो वो जो चाय है अंदर इन द फॉर्म ऑफ टी लीव्स इज व्हाट द एक्चुअल प्रोडक्ट इज. द येलो कंटेनर दैट यू हैव इज व्हाट the packaging is all about. Lipton yellow label is what branding is all about, or is what we call the brand name. And on that box or on that packaging, when you say it is manufactured by this company and it contains tea leaves and flana and preservatives and sab kuch, that is what labeling is. So labeling is basically part of packaging, and it contains the name of the manufacturer, it contains or it has a name of the particular product, or it has a brand name, and it will also have contents as well. Similarly, जब आप नेस्ले के fruit juices उठाएंगे तो the liquid inside is what the brand is all about, or what the product is all about. The Tetra Pak container is what packaging is all about, and when you have that this is manufactured by Nestle, that is what label is all about. Or it would have sugar and fruit juices and preservatives and artificial color, that is what the contents will be all about. So आप इन तीन चीज़ों के थ्रू branding, पैकेजिंग एंड लेबलिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोडक्ट को रिकग्नाइज या आइडेंटिफाई करते हैं. ब्रांडिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं या रिकग्नाइज करते हैं, पैकेजिंग के थ्रू आइडेंटिफाई और रिकग्नाइज करते हैं, और लेबलिंग के थ्रू आइडेंटिफाई और रिकग्नाइज करते हैं. Now again, जब हम ब्रांडिंग की बात करेंगे तो let's just discuss branding in a little bit more of in more detail. ब्रांडिंग का basically purpose value addition होता है. Again, why do people buy Lipton every time and not buy Tipal? Because they feel कि Lipton जो है वो चाय बेहतर है, उसका रंग बेहतर आता है, उसकी खुशबू बेहतर है, उसका टेस्ट बेहतर है. So just the brand name is actually adding value to what the customers are getting. Now जब आप branding की बात करेंगे तो इसमें आप brand equity और ब्रांड अवेयरनेस की भी बात करेंगे. ब्रांड इक्विटी इज बेसिकली द डिग्री ऑफ कंज्यूमर लॉयल्टी टू एंड अवेयरनेस ऑफ अ ब्रांड एंड इट्स मार्केट शेयर. ब्रांड इक्विटी इज कि एक कस्टमर कितना ज़्यादा लॉयल है या कितना ज़्यादा ब्रांड लॉयल है, कि जी अगर एक इंडिविजुअल लिप्टन येलो लेबल पीता है तो वो लिप्टन येलो लेबल ही पिएगा. he or she is not going to shift to any other tea brand. ना वो टपाल पिएगा, ना वो सुप्रीम पिएगा, वो सिर्फ लिप्टन येलो लेबल पिएगा. एक दुकान में जाता है, वहाँ पर लिप्टन येलो लेबल नहीं है तो वो दूसरी दुकान में जाएगा और वहाँ से लिप्टन येलो लेबल खरीदेगा, लेकिन खरीदेगा सिर्फ लिप्टन येलो लेबल. जब हम ब्रांड इक्विटी की बात करेंगे, इट्स बेसिकली द डिग्री ऑफ कंज्यूमर लॉयल्टी, कि वो कितना ब्रांड लॉयल है, उसकी ब्रांड अवेयरनेस कितनी है एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, और एक पर्टिकुलर ब्रांड का मार्केट शेयर कितना है. मार्केट शेयर basically how many the number of people that are consuming a particular product. So when you have a high level of brand loyalty, when you have a high level of brand awareness, and when you have a high market share, that is the point when a brand has a very high level of brand equity. Now branding is related. The second thing that we need to understand is something called as brand awareness. Brand awareness is basically extent to which a brand name comes to mind when consumers consider a particular product category. For example, cold drink, Coke; juice, Nestle; milk, Milk Pack, right? Jeans, Levi's. That is what brand awareness is. कि अगर मैं आपको एक particular product category बताती हूँ, कौन सी ब्रांड या कौन सी प्रोडक्ट आपके सबसे पहले जहन में आती है? टी, लिप्टन. So that is what product awareness is. Again, you need to test yourself again. Just say product categories: shaving foam, Gillette; razor, Gillette. So that is what ब्रांड अवेयरनेस है. कि जब आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करते हैं, एक जनरल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो आपको कौन सा ब्रांड नेम आपके जहन में आता है? व्हेन आई से जूसेस,
Nestle juice is what will come to my mind, and that is what brand awareness is कि मैं फिर Nestle ही का खरीदूंगी. Milk pack. Every time मैं मिल्क की सोचती हूँ, मेरे जहन में मिल्क पैक आता है. मिल्क पैक की दैट इज़ व्हाट ब्रांड अवेयरनेस इज, कि जब आप कस्टमर को एक पर्टिकुलर कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी बताएंगे, या जैसा मिल्क है या जूस है या शेविंग फोम है या रेजर है या टिश्यू पेपर का रोल है, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही ब्रांड आता है, टिश्यू पेपर रोल. आप कौन सा खरीदेंगे? आपके जहन में एक ही आएगा. ठीक हो गया? या सोप, लक्स. So that is what brand awareness is. And again, brand equity के लिए आपको brand loyalty की भी ज़रूरत है, brand awareness जिसको मैंने अभी आपको explain किया उसकी भी बहुत ज़रूरत है, और market share की भी ज़रूरत है. And when all these things are available, or when a brand accomplishes all these things, that is the point in time when the brand equity is very, very high. तो जब हम brands की बात करते हैं, there are 3 different types of brands that manufacturer can have. What are those 3 different types of brands? National brands, licensed brands and private brands. Now इनको भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. First up are your national brands. National brands are those which are produced by a manufacturer and they are distributed by a manufacturer. Let's say bakeries. जितनी भी bakeries हैं, अगर आप पिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर में रहते हैं, तो राहत would be something जो कि which would be very common to all of you, right? So राहत produces cakes and produces breads and produces all different pizzas, right? जो national brand एक ऐसा brand होगा जो कि produce भी एक ही बंदा करे और sell भी एक बंदा करे. For example, Rahat is the name of an organization, right? Now Rahat is the one which is producing breads, and again Rahat is the one who is selling breads to the final consumer. So that is what we call as a national brand. So those products which are produced and which are distributed by the manufacturer are called as national brands. The second type of brand is what we call as a licensed brand. A licensed brand is basically when the seller purchases the right from an organization or an individual. ठीक हो गया? जब फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरर से राइट्स ले ले कि जी हम आपके नाम की चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करेंगे अपनी कंपनी में और आप ही के नाम से उसको सेल करेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ लाइसेंस ब्रांड. व्हेन अ सेलर परचेसेस द राइट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड टू सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एंड फाइनली you have private brands. Private brands are those brands which are owned and operated by wholesalers and resellers, right? Let's say कि आप grocery store जाते हैं. Grocery store में क्या होता है कि आपको एक चावल या शुगर के बैग्स मिलते हैं जिसमें ग्रोसरी स्टोर का नाम लिखा होता है. नाउ क्या वो ग्रोसरी स्टोर खुद वो चावल या चीनी प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं. What they're doing is they're buying that sugar and they're buying that rice from some XYZ company, and उसको खरीदने के बाद आपका ग्रोसरी स्टोर उसको पैक करता है और उसको सेल कर देता है. सो दोज आर कॉल्ड एज योर प्राइवेट ब्रांड्स. व्हेन अ होलसेलर और अ रिटेलर डेवलप्स अ पर्टिकुलर ब्रांड, वो खुद प्रोड्यूस नहीं करता उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, वो किसी भी जगह से उस प्रोडक्ट को खरीदता है. चीनी को खरीद लेगा, चावल को खरीद लेगा, बेशक वो फार्मर से खरीदेगा या फैक्ट्री से खरीदेगा. वो खरीदेगा फैक्ट्री से, अपने प्रेमिसेस को लाएगा, अपने पैकेट्स में बंद करेगा और कंज्यूमर को बेचेगा. So these are 3 different types of brands that you have. National brands is when the manufacturer is producing a product and selling a product. Private brands are those brands when a wholesaler or a retailer, intermediary जो है वो परचेज करता है प्रोडक्ट और अपने नाम से उस प्रोडक्ट को सेल करता है. एंड देन यू हैव लाइसेंस ब्रांड्स व्हेन अ कंपनी टेक्स अ परमिशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी. फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेंचाइज की बात करें, दैट्स अ लाइसेंस ब्रांड, जहाँ पर जो आपका फ्रेंचाइजी है वो फ्रेंचाइजर से ब्रांड के नाम को यूज़ करने की परमिशन लेता है कि हम आपका नाम यूज़ करके आपके नाम की प्रोडक्ट जो है वो हम अपने मुल्क में बेचेंगे. सो लाइसेंस ब्रांड इज व्हेन अ सेलर परचेजेस द राइट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन or an individual to sell that particular product in the market. So this was all about
द फर्स्ट पी ऑफ मार्केटिंग है। जब हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला पी जो है वो प्रोडक्ट है। एंड व्हाट वी जस्ट डन सो फार इन चैप्टर नंबर 11 इज टॉक ऑल अबाउट कि जी प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट को किस किस्म की टाइप्स की प्रोडक्ट्स होती है, कंज्यूमर भी, इंडस्ट्रियल भी, और फिर उसकी आगे डिविजन्स क्या होती हैं। देन वी ऑल्सो डिस्कस कि अच्छा जब हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आपकी प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट के रेफरेंस है, उसको रिकग्नाइज करना भी ज़रूरी होता है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग की बात की, और फिर डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड्स की बात की। सो वी हैव जस्ट कवर्ड द वेरी फर्स्ट पी ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। नाउ इसके आगे हम सेकेंड पी, जिसको हम प्राइस कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस इज कि प्राइसिंग क्यों करते हैं, या प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। वाई डू कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस प्राइस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसकी क्या रीजंस होते हैं। फर्स्ट अप इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। Very first simple reason, you price a particular product so that you can have or you can make profit for your organization. अगर आप प्राइसिंग नहीं करेंगे, आप कोई प्राइस प्रोडक्ट की सेट नहीं करेंगे तो उसको फ्री में बेचेंगे। जब फ्री में बेचेंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट कहाँ से आएगा। The very first and the most important pricing objective is profit maximization. You price a particular product so that the company can maximize its profit. सेकेंड अप इज मार्केट शेयर। अगर आप प्राइसिंग नहीं करेंगे तो अगेन आप मार्केट शेयर कैसे अचीव करेंगे। मार्केट शेयर क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। मार्केट शेयर इज बेसिकली मार्केट शेयर इज अ कंपनीज परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट सेल्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट टाइप, कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदते हैं, या कितनी सेल्स हो रही हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। द मोर द सेल्स, the more the market share. So that is what we call as a market share. And again, pricing or market share का there's a very close link. For example, if you reduce your prices, that means the market sales for your product will increase. When the sales of your product will increase because of reduced prices, that will automatically mean that you will have more market share. On the other hand, if you increase the prices of your products, that means that the market sales of your product will decrease. When the sales of your product will decrease, what will then it mean for the company? It would mean that the company is going to have lesser or lower market share. So जो second objective है आपके प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है वो मार्केट शेयर या मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट शेयर भी है। जब भी आप कोई प्राइस सेट करते हैं तो आप एक ऐसी प्राइस सेट करते हैं जो कि ना बहुत ज़्यादा हाई हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई होगी तो मार्केट शेयर कम होगा। यू डू नॉट वांट योर प्राइस के बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, बिकॉज बहुत कम होगी then people or customers might feel कि जी इस प्राइस पर ये प्रोडक्ट बन रही है, there's something wrong with this product. So what you need to do is you need to have a balance of a price, कि ना बहुत ज़्यादा हाई हो ना बहुत ज़्यादा लो हो. It must be a balanced price so that your customers should feel comfortable with buying of that product. एंड फाइनली आप जब ई बिज़नेस की तरफ भी जाते हो तब भी आप प्राइसिंग को देखते हो कि स्पेशली जब आप ई बिज़नेस कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस कर रहे हो या इंटरनेट के थ्रू सेलिंग कर रहे हो तो आपको प्राइस को कैसे रखना है। आप फिक्स प्राइसिंग रखोगे जो कि सेम रहेगी, या आप चेंज प्राइसेस की बात करोगे जो कि कस्टमर टू कस्टमर चेंज होगी, आप ये सब चीज़ें सोचते हो। सो बेसिकली विद रेफरेंस टू प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स आपके प्राइमरीली जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जब भी आप प्राइसिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव दैट यू नीड और दैट यू हैव इज दैट यू नीड टू हैव maximum market share for your particular product. So these are your pricing objectives. Next thing that we will talk about is कि जी price set कैसे करते हैं. It's a very complicated thing. Again, marketing के आप आगे और courses पढ़ेंगे and you will study how to set prices of a particular product in much more detail. But at this point in time, you need to realize कि प्राइस और सेटिंग ऑफ प्राइस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. क्या रखें क्या ना रखें. बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी कोई नहीं खरीदेगा, बहुत कम हो जाएगी तो इमेज सही नहीं आएगा. पीपल माइट फील कि यार ये तो इतनी कम प्राइस है, समथिंग रॉन्ग, क्वालिटी का कुछ इश्यू होगा. Now generally companies have two different price setting tools. One is called as cost oriented pricing and the other one is called as break even analysis, and companies use a combination of these two tools, cost oriented pricing and break even point. They use a combination of these two tools to come up with the right price for their particular product. सबसे पहला tool क्या है, which is called as cost oriented pricing. Cost oriented pricing basically combines two things. First up,
it combines the point or the fact that an organization is making a product so that it can achieve or so that it can earn a profit. So cost oriented pricing में पहला objective क्या है? Profit maximization or profit earning. Second objective क्या है? That you need to have a price जो कि आपकी costs को या expenses को cover करे. Cost या expenses क्या होंगे? उसमें आपका rent भी आएगा, utility भी आएगी, उसमें आपकी salary भी आएगी, उसमें आपके raw material की cost भी आएगी, उसमें आपका machinery की cost भी आएगी. सब आपकी different cost हैं. So cost oriented prices जो हैं वो दो चीज़ों को cover करती है. एक आपके profit को कि जो भी आप product बना रहे हो उसमें आप profit कमाएं, and second is कि आप ऐसी प्राइस सेट करें जो कि आपकी कॉस्ट को कवर कर सके. सो कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग इज सेटिंग अ प्राइस विच विल गिव यू अ प्रॉफिट एंड विच विल आल्सो कवर योर कॉस्ट. अगेन जब आप कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग की बात करते हैं उसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट इज सेल्स प्राइस, कि आप कौन सी सेल्स प्राइस डिटरमिन करें या कौन सी सेल्स प्राइस सेट करें. सेल्स प्राइस इज बेसिकली द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आप क्या प्राइस सेट करें विच विल मेक प्रॉफिट फॉर यू and which will also cover cost for you. Now at this point in time let's say कि जी एक हमारा CD retailer है, ठीक हो गया. अब ये जो CD retailer है उसकी जो cost है for making of a particular product वो let's say $8 आ रही है, जो उसकी manufacturing cost है वो $8 है. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर $8 आपकी कॉस्ट है या $8 आपके एक्सपेंसेस हैं, तो अगर ये CD रिटेलर $8 की अपनी CD सेल करेगा तो क्या उसको प्रॉफिट होगा? नहीं होगा. 9 की करेगा तब होगा, तब भी नहीं होगा. 10 की करेगा तब होगा, तब भी नहीं होगा. अच्छा, 9 और 10 पर क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपने $8 इज जस्ट योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. दैट मीन्स कि जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल को यूज करके जो आपने CD बनाई उसमें आपको $8 लगे, लेकिन रॉ मटेरियल के अलावा आपने सैलरी भी दी, वो भी तो एक कॉस्ट होगी ना. आपने यूटिलिटी बिल्स, बिजली का बिल दिया, वो भी आपकी कॉस्ट होगी. आपने पेपर खरीदा कुछ नोट शोट लिखने के लिए, वो भी आपकी कॉस्ट होगी. आपने प्रमोशन की उस पर्टिकुलर CD की या अपनी कंपनी की, वो भी आपकी कॉस्ट होगी. सो अगर $8 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और $80 की वो CD रिटेलर अपनी CD को बेचता है तब तो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता. अगर वो 9 की भी बेचेगा तब भी उसकी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो कवर हो रही है, लेकिन जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है या उसकी जो सैलरी की कॉस्ट है वो तो कवर नहीं हो रही. इसका मतलब है वो $8 पे भी प्रॉफिट नहीं कमाता, 9 पर भी नहीं कमाता, 10 पर भी नहीं कमाता. फाइनली वो कहता है कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं $8 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और $7 और अपनी प्राइस सेट करता हूँ और अपनी जो CD है उसको $15 की बेचता हूँ. इस $15 में आपकी जो $8 हैं वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई और बाकी जो $7 हैं उसमें आपकी रिमेनिंग कॉस्ट भी आई और आपका प्रॉफिट का जो मोटिव है कि मैंने प्रॉफिट भी अर्न करना है या प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी आ गया. सो जब हम सेल्स प्राइस की बात करते हैं, सेल्स प्राइस बेसिकली विल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. व्हेन आई से कॉस्ट इट विल इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. दिस सेल्स प्राइस विल ऑल्सो इंक्लूड योर प्रॉफिट. मार्कअप इज बेसिकली कि आप कितना प्रॉफिट मार्जिन या आप कितनी प्रॉफिट परसेंटेज लेते हैं. सो सेल्स प्राइस में आपकी कॉस्ट भी शामिल होगी और आपका जो मार्कअप है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स या आपका मार्कअप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी शामिल होगा. नाउ क्वेश्चन इज कि जी आप मार्कअप परसेंटेज जो कि ये है, हाउ डू यू कैलकुलेट योर मार्कअप परसेंटेज? मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज सिंपल इनफ. मार्कअप परसेंटेज इज इक्वल टू मार्कअप डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस. ठीक हो गया? दैट मीन्स दैट योर मार्कअप हेयर वॉज $7, राइट? $8 हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई थी, उस पर हमने $7 एडिशनल लगाए जो कि हमारी मार्कअप था, एंड सेल्स प्राइस वॉज ₹15 बिकॉज ₹15 कैसे आए? 8 फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, $7 फॉर योर मार्कअप, 8 + 7 इज इक्वल टू 15. सो मार्कअप परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला है वी डिवाइड योर मार्कअप by your selling price. So in our CD retailer case, what we do is we divide 7 by 15. Now once you divide this, you have 46.7% as your markup percentage. इसका मतलब ये हुआ that for every $1 that this CD retailer has, या $1 पर इस CD retailer को 0.46 cents का फायदा होगा. समझ में आई? या for every CD sold, this particular CD retailer will have a profit percentage of 46.7%.
इन अदर वर्ड्स एक सीडी पर ये सीडी रिटेलर 46.7% का प्रॉफिट जो है वो कमाएगा. सो दिस इज व्हाट और दिस इज द वेरी फर्स्ट way of setting your price, or this is one of the tools for setting your price. इसको हम cost oriented pricing कहते हैं. आप अपनी प्रोडक्ट की ऐसी प्राइस सेट करेंगे जिसमें प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप जो है, मार्कअप परसेंटेज वो भी, या प्रॉफिट मार्जिन भी होना चाहिए, और वो आपकी कॉस्ट को भी कवर करे, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको भी कवर करे. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग. अगेन अगर कोई जहन में कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए विल जस्ट डू अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ द cost-oriented pricing. Cost-oriented pricing is basically setting up a sales price which will include your cost of production या manufacturing cost plus your profit margin. Now इस markup percentage को या profit percentage को आप कैसे calculate करते हैं कि जी मैं अगर एक product sell करूँगा तो मैं कितने % profit बनाऊँगा, उसको calculate करने के लिए you divide your markup by your sales price. इस example में हमारी जो manufacturing cost थी वो $8 थी. हमने जहन में सोचा कि हम $7 जो हैं वो हम इसका मार्कअप लगाएंगे. सो 8 + 7 ऐड करके हमने सेलिंग प्राइस 15 कर दी. व्हेन यू डिवाइड योर मार्कअप व्हिच वाज 7 by 15, योर प्रॉफिट percentage comes to 46.7%. That means that every time that this CD retailer will sell a CD, he will earn a profit percentage of 46.7%, right? So I hope that you understand what cost oriented pricing is. Now the second tool that you have for setting up a price is what we call as a break even analysis. Again, जब हम break even analysis की बात करेंगे, you need to understand कि जो हम दो tools को study कर रहे हैं, they're not used independent of each other. आप cost oriented pricing को break even analysis के साथ use करके अपनी price को set करते हैं. Now before we go into what break even point is or what break even analysis is, you need to understand two types of things. First up is कि जब मैं cost की बात करती हूँ, you have two different types of cost, variable cost and fixed cost. Variable cost is that cost which varies with production. मतलब कि अगर आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी, अगर आप ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ योर रॉ मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज इफ यू आर प्रोड्यूसिंग लेसर यूनिट्स दैट मीन्स दैट यू विल नीड लेसर रॉ मटेरियल. अगर रॉ मटेरियल कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम आएगी. अगर ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे तो ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, जब ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहेगा तो वो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के साथ वेरी होगी. सो वेरिएबल cost is basically that cost which varies with production. On the other hand, fixed cost is that cost which does not vary with production. मतलब कि आप 5 यूनिट प्रोड्यूस करें या आप 500 यूनिट प्रोड्यूस करें, fixed cost will remain the same. For example, रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट. अगर आपके पास ये एक कमरा है, इस कमरे में आप 5 यूनिट प्रोड्यूस करें या 500 यूनिट प्रोड्यूस करें, आपने कमरे का रेंट जो है वो 5000 ही देना है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ फिक्स्ड कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच वेरीज विद प्रोडक्शन एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद प्रोडक्शन. Now वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के बाद हम आपको समझाएंगे कि what is break even point. Now break even point as per definition is that point whereby the company is in a situation whereby there is no profit, no loss. And break even point is always mentioned in terms of units. So अगर मैं कहती हूँ कि जी break even point is 500 units, it basically means कि जब company 500 यूनिट प्रोड्यूस कर लेगी, that would be the point whereby the company will not have earned any profit, but the company would also not have incurred any losses. That means कि अगर वो 501st यूनिट या 501 यूनिट बनाती है, that is the time when the company will start earning a profit. और अगर वो 499 यूनिट्स बनाती है, that will be the time जहाँ पर कंपनी जो है वो लॉस में होगी. So break even point is basically that point whereby the company is neither in profit nor in loss. Now break even point आप calculate कैसे करते हैं? Again, break even point is always calculated in terms of number of units. Total fixed cost divided by price minus your variable cost. ठीक हो गया? Now total fixed cost in our case or CD retailer case is $100,000.
Price for one CD was $15, which was 8 for your manufacturing or variable cost and 7 for your profit margin, remember? So price हमारी $15 की होगी और 8 जो थी, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कही थी, वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी. हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, हम कम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी. सो टू फाइंड आउट व्हाट योर ब्रेक इवन पॉइंट इज, यू डिवाइड योर टोटल फिक्स कॉस्ट बाय price minus your variable cost. In our example, 100,000 is your fixed cost. You divide that by price was $15 minus $8 for your variable cost or your manufacturing cost, and when you divide this you come up with 14,286 CDs. इसका मतलब ये हुआ कि जब ये CD retailer 14,286 CDs sell करेगा, that would be the point whereby the company would be in a no profit no loss situation. However, अगर ये CD retailer 4,287th CD sell करता है, that is the point whereby the company will start earning a profit. Or if the CD retailer will sell 14,285 CDs, that will still be the point when the company or the CD retailer would be incurring losses. So break-even point is basically the point जहाँ पर कोई भी company, कोई भी organization जो है वो no profit no loss की situation में होती है. Again, just to explain to you what break-even point is or what break-even analysis is, we've just made a figure so that maybe it will further clarify the concept of break-even point and break-even analysis in your mind. When you're doing a break-even analysis, you have the money in dollars amount or the money on this axis, and you have number of units sold on this axis, right? Now what we have is that this red line that you have is basically telling you your total revenues. Revenue आप कैसे calculate करते हैं? Number of units sold multiply by the selling price. So हमारी CD के केस में the selling price was $15. When it is multiplied by the number of units sold, you get your total revenues, and that is depicted by this red solid line. On the other hand, your total cost, which are your fixed cost and your variable cost, is what you have and what we call as your total cost. Again, total cost में आपकी fixed cost भी आती है और variable cost भी आती है. Just so that you can understand what again हम recap कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, fixed cost is that cost which does not vary with production and variable cost is that cost which varies with production. So total cost की जब हम बात करेंगे उसमें आपकी fixed cost भी शामिल होती है और उसमें आपकी variable cost भी शामिल होती है. Now the intersection of your total cost and your total revenues, or whereby these two lines cross each other, that is what we call as your break-even point. So this becomes the point when somewhere between 14,000 plus is the point when the company will neither be in profit nor be in loss. Because अगर आप पहले की बात करें तो here the costs are more as compared to your revenues, right? The company is incurring more cost and lesser revenues, as a result of which this green shaded area will depict that the company is going into loss. However, इस intersection के बाद your costs are reducing and your revenues are going up. So इस intersection के बाद, which is called as your break even point, this green part or this green highlighted area will show the company कि उस company ने profit कितना बनाया है. So again, break even point is basically that point जहाँ पर company, again and again I'm just repeating myself so that there's no confusion in your mind, that a break even point is always expressed in number of units. ये dollar terms में नहीं होता, ये rupee terms में नहीं होता, it is always expressed in terms of number of units. So break even point का मतलब ये कि जब ये company 14,000 plus units produce करेगी, that will be the point जहाँ पर company जो है वो neither profit में होगी nor loss में होगी. 14,800 से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो प्रॉफिट में जाएगी, 14,800 से कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी तो वो लॉस में जाएगी. सो दिस इज व्हाट योर ब्रेक इवन एनालिसिस इज एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ ब्रेक इवन पॉइंट. अगेन, जब भी आप प्राइस सेट कर रहे होते हैं, your price setting strategy is in combination of your cost oriented pricing and your break even point analysis. आप दोनों को separately use नहीं करते.
जब आपने अपनी प्राइस सेटिंग टूल्स की जब हमने बात की, तो फिर नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। नाउ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो आप उसकी प्राइस सेट कैसे करेंगे? Whenever a company is setting price for its existing products, it keeps in its mind के जो competition है उसने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे सेट किया, बिकॉज मल्टीपल कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड एवरी सिमिलर प्रोडक्ट इज मोर और लेस प्राइस्ड इन अ सिमिलर मैनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोक पिए या पेप्सी पिए या 7 अप पिए या स्प्राइट पिए या मिरिंडा पिए या फैंटा पिए, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्राइस? सिमिलरली आप लिप्टन टी लें या टपाल लें या सुप्रीम लें, इज देयर एनी डिफरेंस इन प्राइस? तो point that I'm trying to make here is that similar products will have similar pricing strategies, or companies which are producing similar products will try to price their products in a similar manner as well, या उनकी जो price होगी वो एक दूसरे से similar होगी। Again, जब आप current existing products की बात करते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि whenever an existing product is being marketed, sometimes what companies do is कि generally more or less वो सेम प्राइस ही रखती हैं, सिमिलर प्राइसेस भी रखती हैं, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है दैट दे इंक्रीज देयर प्राइसेस। अगेन, प्राइस इंक्रीज करने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। समटाइम्स दिस इंक्रीज इन प्राइस माइट मीन टू कस्टमर दैट द कंपनी इज यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी और द कंपनी इज प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी, दैट्स व्हाई इट इज प्राइसिंग इट्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट at a higher rate as compared to its competition. On the other hand, sometimes what companies do is that they price their product at a lower end with respect to the competition. Competition के price ऊपर होती है, आपकी product की price नीचे होती है. Again, this reduction in price might mean additional market share for the company. So company जब भी अपने existing products को market में लेकर आती है, generally वो similar pricing strategy रखती है, same prices ही रखती है, but sometimes it can have a price higher than the competition, or it can have a price lower than the competition. Lower price basically market share के लिए होगी और higher price basically इसलिए होगी so that the image that that particular company is creating for its brand might be कि बेहतर क्वालिटी के ब्रांड है। अगेन, जब आप न्यू प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात करेंगे या कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएंगे तो दो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो कंपनी के पास अवेलेबल होंगी। अभी जो पिछली साइड में हमने बात की वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए बात की थी। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम न्यू प्रोडक्ट के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। विद रेफरेंस टू न्यू प्रोडक्ट, कंपनीज हैव टू डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, प्राइस स्किमिंग एंड प्राइस पेनिट्रेशन. Price skimming basically is that whenever you bring a new product into the market, you set its prices higher than the competition. Now, why do you want to set it higher than the competition? Because you believe KG, you want to create that image that it's different from the competition. आप इसलिए higher price charge करें because इसकी quality बेहतर है, ये more technologically advanced product है, इसकी ये ज़्यादा improved product है, इसलिए आप उसकी price ज़्यादा रख रहे हैं. So that is what प्राइस स्किमिंग इज. अगेन, जब आप प्राइस स्किमिंग करते हैं देन कंपनीज जो है वो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? बिकॉज व्हाट दे डूइंग इज द प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट सोल्ड बिकम्स वेरी हाई. सो वो जितने बेशक कम यूनिट सेल करेंगे, लेकिन सिंस उनका प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट सोल्ड विल बी वेरी वेरी हाई, दैट इज हाउ दे गोइंग टू अर्न देयर प्रॉफिट. The other pricing strategy that companies have when they're introducing new product is something called as market penetration. Market penetration is when companies ask for a lower price as compared to competition. कि अगर competition let's say 100 की चीज़ सेल कर रहा है तो आप अपनी नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको 65-70 की सेल करते हैं. अगेन, मार्केट पेनिट्रेशन के पीछे जो थॉट जाती है वो ये जाती है दैट companies set a lower price for their new product because they feel कि जी जब price कम होगी then automatically there will be more sales. When there will be more sales, there will be more sales volume. When there will be more sales volume, there are going to be more profit for the company and more market share for the company. So that is the thinking process behind selecting a market penetration strategy for a company. Again, जब आप किसी भी नई प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आएंगे then companies would have two options available. They can go for price skimming, which is basically charging a higher price than the competition, or charging a higher price for your product. And the second option will be market penetration, which is charging a lower price for your product, for your new product. So these are the two pricing strategies available for a company when they're introducing a new product. Next is
ई बिजनेस या इंटरनेट बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, या व्हेन यू आर सेलिंग एंड डूइंग बिजनेस ऑनलाइन, तो आपकी प्राइसिंग ऑप्शंस क्या हैं? उसमें आपकी फिक्स्ड और डायनामिक प्राइसिंग ऑप्शंस होते हैं. फिक्स्ड प्राइसिंग ऑप्शन मीन्स दैट the price of your product will remain the same irrespective of who is buying and how much they are buying. So कौन खरीद रहा है, कितने numbers में खरीद रहा है, आपकी price same होगी. On the other hand, dynamic pricing is basically that you change your prices with reference to the type of customer. आप customer से one to one interact कर रहे होते हो, आप customer के साथ prices भी change कर रहे होते हो. Dynamic pricing is a characteristic or a pricing strategy which can only be used for e-business. Why? Because e-business या internet या computers के through अगर आपकी जो price changes होते हैं, because dynamic would means that your prices would be continuously fluctuating. However, yes, they are continuously fluctuating, but the changes in price is also communicated on a continuous basis to your customers as well. That is why you can use dynamic pricing in your e-business या जब आप internet business कर रहे होते हैं उसमें आप dynamic pricing use कर रहे होते हैं, because आप computers के through, internet के through काम कर रहे होते हैं, आपके जितनी price changes आ रही होती हैं वो आप फौरन अपने customers को बता रहे होते हैं. As a result of which, a customer can take advantages of those reduced prices or changing prices. So that is what your fixed and dynamic prices are with respect to e-business. When you have the same price throughout, that is called as fixed pricing, and when you have changing or changed price or price which is continuously changing, that is what we call as dynamic pricing. नेक्स्ट इज हमने प्राइसिंग टूल्स की बात कर ली, हमने प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की बात कर ली. उसके बाद आपकी प्राइसिंग टैक्टिक्स आते हैं. प्राइसिंग टैक्टिक्स आर अगेन आप किस तरीके से अपने कस्टमर को मोटिवेट करोगे टू मेक अ परचेज एंड टू पे अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Pricing tactics में there are 3 different types of pricing tactics. First up is price lining. Price lining is when a store predetermines 3 or 4 prices points at which a particular product can be sold. एक particular store या एक particular outlet या एक particular organization जो है वो category wise prices की limit set कर लेती है. For example, men's suit will be sold in between 3,000 to 7,000. Women's jewelry will be sold in between 1,000 and 3,000. Kids' shoes will be sold in between 500 and 1,500. That means that all kids' shoes will be priced between 500, 1,000 and 1,500. So price lining is कि एक organization या एक store जो होता है with reference to particular product 3 different या एक pricing category को set कर लेता है कि ये particular product category इस point से इस point तक sell की जाएगी, ये particular product category की price minimum इतनी और maximum इतनी हो सकती है, या इसकी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फ्लक्चुएट कर सकती है. दैट इज व्हाट वी कॉल दिस प्राइस लाइनिंग. सेकंड इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि वी गो टू अ पर्टिकुलर स्टोर इन अ पर्टिकुलर आउटलेट एंड वी वांट टू बाय शूज. इवन बाटा एंड सर्विस टू दिस, दैट वी गो टू बाटा टू बाय अ शू एंड वी पिक इट अप एंड वी से 1999 एंड वी से 2,000 नहीं है, it is less, इतनी ज़्यादा नहीं है. और वी पिक अप स्लीपर एंड वी से 999, कोई बात नहीं तो सस्ती है. 1,000 और साइकोलॉजिकली व्हाट यू थिंक इज 1,000 जो है ना वो एक बड़ी अमाउंट है, बट 999 दैट इज अफोर्डेबल. दैट इज व्हाट वी कॉल अ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, वेयर बाय यू आर बेसिकली आप कस्टमर की साइकोलॉजी को यूज़ करें. 599 या लेट्स से 499 लुक्स के हाँ अफोर्डेबल है, बट 500 की जब कैटेगरी या 500 की लाइन क्रॉस करते तो कहते हैं नहीं यार ये तो अफोर्डेबल नहीं है, मेरे बजट से बाहर है. और 499 और 500 में कितना फर्क है, जस्ट 1 रुपी, राइट? बट 499 looks affordable, but 500 does not look affordable. So that is what we call as psychological pricing. Finally, you have discounting. So when you have those big billboards that, for example, today these days you have 70% discount on all service stores.
So what you do is 70% discount, let's go shopping. It's a psychological thing. Or idea says कि 25% discount on all items. Or Chanwan says 15% to 70% discount on all items. शायद मैं Chanwan से कभी भी shopping नहीं करूँ because I feel that Chanwan is a very expensive shop to go to. लेकिन जब मैं ये promotion पढ़ती हूँ या ये ad देखती हूँ कि 15 to 50% off on all items, I say let's go to Chanwan and shop. So again, discounting or reduction in prices to a particular level or to a particular percentage is basically ways and means through which you motivate your customers to leave everything behind and come and shop at your places. So चाहे वो price lining हो जाए या वो discounting हो जाए या वो psychological pricing हो जाए, these are all various different types of tactics that are available to companies, to organization for pricing a particular product. Finally, to end our chapter, what we're going to do is we're going to talk about international pricing. What you would have noticed so far is कि whenever we're ending a particular chapter, हम सब चीज़ें discuss कर लेते हैं. उसके बाद हम discuss करते हैं कि अगर आपने अपनी business को global level पर लेकर जाना है, अगर आपने अपने business को international level पर लेकर जाना है, तो आप अपनी चीज़ों को क्या करेंगे या किस तरह मैनेज करेंगे. चाहे वो मार्केटिंग मिक्स हो, हमने मार्केटिंग मिक्स को भी विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पढ़ा, बिल्कुल उसी तरीके से हम प्राइसिंग को भी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे. अगेन, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं या इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग योर बिजनेसेस अब्रॉड और इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग योर बिजनेस ग्लोबली, यू नीड to have a pricing strategy in mind. You need to understand. और जब आप अपने उन products की pricing करते हैं जो कि international market में sell करनी है, then you have various other factors to consider. आपको ये भी देखना है कि जो कि आप product लेकर दूसरी country में जा रहे हैं, क्या वहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट किस प्राइस की बेच रही है. अगर आप अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान में लेकर आते हैं और यहाँ पर आप 1500 रुपीज़ की बेचते हैं, ऑन द अदर हैंड द सेम प्रोडक्ट और सिमिलर प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन पाकिस्तान फॉर ₹500, देन हु विल बाय योर प्रोडक्ट. सो व्हेनेवर यू आर taking your product outside your own country, you need to understand कि जिस country में आप लेकर जा रहे हैं उस country में similar products की prices क्या होंगी, क्या आप उनके साथ compete कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते. And similarly, जब आप किसी दूसरी country में अपनी product को लेकर जाते हैं, for example, if a company in US is bringing its products to Pakistan, then that company needs to realize that US economy is very different from Pakistan's economy. हमारी inflation rate, हमारा purchasing power parity या हमारी purchasing power is very different from the economy in the United States of America. So the same price that they were charging for their product in the United States of America cannot be charged in Pakistan. So you need to see कि जी आपकी economics क्या है या personal economics क्या है. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जब आप पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान के जब हालात बेहतर हों या इकोनॉमी बेहतर हो या लोगों की परचेजिंग पावर बेहतर हो, इन्फ्लेशन रेट्स कम जाए, तो बेशक आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को एज एंड व्हेन इंक्रीज कर दें. बट व्हेनेवर यू टेकिंग योर प्रोडक्ट इंटरनेशनली, यू नीड टू कीप इन माइंड कि उस कंट्री की इकोनॉमिक्स कैसी हैं, उस कंट्री के लोगों की पर्सनल इकोनॉमिक्स कैसी हैं और उस कंट्री में जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग क्या है. The last thing that we need to understand in this chapter is जब आप international pricing की बात करेंगे तो आप dumping की भी बात करेंगे. Now, what is dumping? Dumping is something that we've done before, somewhere in your second, third, fourth chapter. Dumping क्या होती है? When one country takes its product to another country and sells it at a price which is lower than its manufacturing price. So जब भी आप international pricing की बात करेंगे, आप dumping नहीं करना चाहेंगे. आप अपनी प्रोडक्ट को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या अपनी कॉस्ट से कम प्राइस पर दूसरी कंट्री में सेल नहीं करना चाहेंगे. इट इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट लीगल एंड इट इज़ नॉट ethical. So these are 2-3 aspects or 2-3 things that you need to understand when you're taking your products abroad, when you're taking your products globally, and whenever you're pricing your products with reference to the international perspective in mind. Now, this is where we end our chapter number 11, and this is where we end our lecture number 23. You need to be a little more patient because there are just a few chapters and just a few lectures to go. A very quick recap of this particular chapter. What we did was we defined to you what product was. We told you what the new product development process is. We also explained to you कि अगर आप service को develop कर रहे होंगे तो NPD process में आप कहाँ changes लाएंगे. Then we told you कि product की types क्या होती हैं, convenience और industrial goods होती हैं, उनकी further sub types क्या होती हैं. Then we also told you कि product life cycle क्या होता है, उसकी different
डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं. देन वी ऑल्सो सेड कि जी प्रोडक्ट के सिर्फ फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, यू नीड टू रिकग्नाइज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. रिकग्निशन के रेफरेंस से वी सेड कि यू रिकग्नाइज अ प्रोडक्ट थ्रू ब्रांडिंग, थ्रू पैकेजिंग एंड थ्रू लेबलिंग. जब हमने ब्रांड्स की बात की, ब्रांडिंग की बात की, तो हमने उसमें नेशनल ब्रांड की बात की, हमने उसमें इंटरनेशनल ब्रांड की बात, नेशनल ब्रांड की बात की, प्राइवेट ब्रांड की बात की. इंटरनेशनल ब्रांड की हमने बात नहीं की थी. हमने प्राइवेट ब्रांड की बात की थी, नेशनल ब्रांड की बात की थी और लाइसेंस्ड ब्रांड की बात की थी. इस वन टाइम पे हमने कहा कि हमने फर्स्ट पी मार्केटिंग मिक्स का कवर कर दिया. उसके बाद हमने प्राइसिंग की बात की. हमने कहा प्राइसिंग के जब भी आप कोई प्रोडक्ट प्राइस करते हैं उसके सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और मार्केट शेयर मैक्सिमाइजेशन वन ऑफ आर टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स दैट यू हैव. देन वी वेंट ऑन टू से कि जी प्राइसिंग टूल्स भी होते हैं. प्राइस कैसे सेट करनी है is not that easy. There are ways and means, tools through which you set a price. वो tools दो basic कौन से होते हैं? एक break even analysis या break even point होता है, दूसरा cost oriented pricing होती है. आप इन दोनों tools को combination में एक दूसरे के साथ use करके अपनी price जो है वो set करते हो. Tools के बाद हमने कहा कि आपकी different pricing strategies भी होती हैं. Existing product की हमने pricing strategy की बात की जिसमें आप अपने competition से similar price ही रखते हो. New product के reference से हमने pricing strategy की बात की कि जब आप न्यू प्रोडक्ट लेकर जाते हो तो आप प्राइस स्किमिंग या प्राइस या मार्केट पेनिट्रेशन की बात करते हो. उसके बाद हमने कहा कि जी देयर आर सर्टेन प्राइसिंग टैक्टिक्स एज वेल, जिसमें हमने प्राइस लाइनिंग की बात की, हमने डिस्काउंट्स की बात की और हमने साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की बात की. और फाइनली हमने इंटरनेशनल प्राइसिंग की बात की कि जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाएं यू नीड टू अंडरस्टैंड और यू नीड टू कीप इन माइंड द इकोनॉमिक्स ऑफ दैट कंट्री, यू नीड टू कीप इन माइंड द पर्सनल इकोनॉमिक, यू नीड टू कीप इन माइंड कि जिस कंट्री में आप अपनी प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हैं वहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट्स की क्या प्राइसेस हैं. एंड यू नीड टू इंश्योर कि आप जिस प्रोडक्ट को जब सेल करेंगे किसी और कंट्री में यू डू नॉट सेल इट एट अ प्राइस विच इज़ लोअर देन योर manufacturing cost. So this is where we end our lecture number 23 and this is where we end our lecture number 11 and still next time Allah Hafiz.